Now we are moving on to R.K Merton. R.K Merton was a student and also a lifelong critique of Parsons. Now, Merton has been also called a sociologist. A sociologist for other sociologists. उसका मतलब क्या है? He was addressing himself to methodological issues, telling other sociologists how to carry out sociological research. Now, so in these areas of methodological concern, one of the topics of interest for Merton was how to build sociological theory. How to build sociological theory. So for this, he launched a critique of Talcott Parsons' strategy for building sociological theory. इसका क्या मतलब है? He launched a critique of Talcott Parsons' strategy for building sociological theory. इसका क्या मतलब? He starts by criticizing कि जो पार्सन्स ने जिस तरीके से सोशलॉजिकल थियरी को डेवलप किया है, दैट इज नॉट द राइट अप्रोच. Do you understand? The way Parsons has gone about developing his sociological theory, that strategy or approach is not the right one, is not the correct one. He says Parsons' theory is not a theory at all. It is premature, sterile and futile. It is premature, sterile and futile. It is guided by non-scientific concerns. Either Parsons want to provide an answer to all practical problems of social life, or he was imitating matured sciences like physics. Now let me explain this to you. Why is it premature? He says
Parsons is trying to be an Einstein of sociology when sociology does not even have a Kepler. How many people have studied science here? Till 12th. So there are quite a few people who are without science. Now, this is an example here cited from physics. That Kepler's laws of planetary motion was the first generalization developed in physics. It was developed even before Newton, Galileo and Newton. And Einstein tried to develop a single theory by which he could explain the interplay of all forces in the universe. एक सिंगल थ्योरी से सब कुछ एक्सप्लेन हो सके. Einstein represents the peak of physics. अब वो कहता है कि सोशियोलॉजी के पास तो अभी कैपलर भी नहीं आया है. We have not reached to the first level of physics when Kepler generated laws of planetary motion. And Parsons is jumping to be an Einstein. Through from a single theory, he tries to explain everything in society. समझ गए आप? Has everyone understood this point? That is why he says it is premature. Then he says it is sterile and futile. Sterile क्या होता है? Unproductive, which cannot produce. Futile मतलब useless therefore. Because it is unproductive, it is useless. So why is it unproductive and useless? Because it is not a theory at all. It is at best, it provides a general orientation towards society, social reality. कि रिसर्च करते टाइम सोशल रियलिटी के क्या क्या एस्पेक्ट हमें ध्यान में रखने चाहिए. What all aspects should we take into account while conducting research? It is at best a theoretical orientation. It is not a theory. Why? It is all embracing. Every aspect of social reality it is taking into account. Now, a theory is a clearly formulated, verifiable statement between specific variables. I repeat, a theory is a clearly formulated, verifiable statement between specific variables. And what is meant by verifiable? That it is precise and specific enough to be falsifiable. मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी. It should be possible to disprove it. Only then testing a theory makes sense. If now Parsons' theory is so general that we cannot deduce a specific hypothesis to be tested in the light of empirical data. That is why it is unproductive. Theory is always productive.
This is what we are going to talk about a little while later again when I discuss Merton, that theory is productive of and leads to growth of science, scientific knowledge in any area. How? Because from theory, we deduce a hypothesis and then we test the hypothesis repeatedly. And if the hypothesis is repeatedly proved, it generates a new theory. Don't you get? That is the way a theory is productive. Theory leads to growth of science. That is one of the reasons why we build theories. Why all sciences try to build theories, try to discover theories. Now, so Parsons' theory, since it cannot generate specific hypothesis which is verifiable, that means potentially falsifiable, it is unproductive, and that is why it is also futile, bekar hai. It doesn't lead to growth of science, sociology as a discipline. This is his critique of Parsons. Then he goes on to explain what kind of theories we should develop. If what Parsons has done is not the right thing, then what should be the right thing? What kind of theories should be developed? According to Merton, sociology in the present state of development needs theories of middle range. Sociology in the present state of development needs theories of middle range. Then he goes on to explain what are the characteristics of middle range theory. Please come in. One, middle range theories are limited generalization. They have limited generality. Unlike Parsons' theory, which is a universally applicable theory. Next, they should be sufficiently close to empirical reality so that specific and empirically verifiable hypothesis can be deduced from them. Verifiable hypothesis can be deduced from them. All right. Next, they use concepts which can be operationalized. Now, I hope you understand all these points that I have made. You have clearly understood all the three characteristics. Anything you have not understood?
Fourth characteristic. They are grounded theories rooted in empirical data. What does it mean? Do you understand this? Think of Emil Durkheim's theory on suicide. He says rate of suicide is inversely proportional to degree of solidarity. Isn't it? Now, how did he arrive at this conclusion? By looking at data on suicide. All right. In the data on suicide, he found certain patterns. That Catholics have a lower rate than Protestant, married have a lower rate than unmarried, women have a lower rate than men, wartime rates are lower than peacetime rates. So then he looks for the underlying pattern that where solidarity is more, suicide is less. Where solidarity is less, suicide is more. So this kind of pattern he found in the reality. On the basis of that pattern, he arrived at the theory. Parsons ने तो कुछ भी नहीं किया ऐसे. He did not conduct any research. He did not identify any pattern. He only either used commonsensical ideas or picked up concepts from different sources. That is why Parsons' theory is not a grounded theory. जिसको सिंपल हिंदी भाषा में कहते हैं, इसके पैर जमीन में नहीं है. पार्सन्स की थ्योरी के पैर जमीन में नहीं है. इट इज नॉट रूटेड इन द फैक्ट, एम्पेरिकल डेटा. सब समझ गए आप? हैज एवरीवन अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट, they transcend the level of mere empirical generalization. They transcend the level of mere empirical generalization and are sufficiently abstract and general in order to be able to deal with different spheres of social behavior. In order to be able to deal with different spheres of social behavior. What does it mean? अभी जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिए थे, these are the patterns that you find in reality. All right, that everywhere, in every society,
Catholics have a lower rate of suicide than Protestants. तो ये पैटर्न हो गया ना. इट इज नॉट जस्ट वन सिंगल केस कि इंग्लैंड में कैथोलिक्स के साथ ऐसा है. इंग्लैंड में भी, फ्रांस में भी, जर्मनी में भी, डेनमार्क में भी, इटली में भी, लाइक दैट. तो ये एक पैटर्न. ऐसे ही women everywhere have a lower rate of suicide than men. Married people everywhere have a lower rate of suicide than unmarried. And wartime rates tend to be lower than the peacetime rates. Each one is a pattern, and pattern means generalization. It is a pattern found in the reality. So it is called empirical generalization. आप ये बात समझ गए? एम्पेरिकल जनरलाइजेशन का मतलब समझ गए आप? तो these are empirical generalizations, 1, 2, 3 and 4. There are 4 different empirical generalizations. ये अलग अलग चीजें हैं. यहां पे रिलीजन है, या जेंडर है, या मैरिटल स्टेटस है, या कॉन्फ्लिक्ट है. Durkheim arrived at a theory which covers all these different empirical generalizations. Durkheim arrives at a theory that is solidarity, high solidarity. हाई, ये सब हाई सॉलिडेरिटी को रिप्रेजेंट कर, है ना. तो थ्रू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हाई सॉलिडेरिटी ही हैज कवर्ड 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स, और ये लो सॉलिडेरिटी हो गई. तो सुसाइड रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिडेरिटी. इस स्टेटमेंट ने 4 डिफरेंट एम्पेरिकल जनरलाइजेशन को अपने अंदर समेट लिया, सबज्यूम कर लिया, कवर कर लिया, है ना. तो वन थियरी रिलेट्स टू डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ एक्टिविटी. एक रिलीजन है, एक जेंडर का इशू है, मैन वर्सेस वुमेन, एक मैरिटल स्टेटस है. तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स आर कवर्ड बाय अ सिंगल थियरी. दैट इज हाउ थियरी इज मोर जनरल देन एम्पेरिकल जनरलाइजेशन. तो इसलिए मिडिल रेंज थियरी इज, पहले हमने कहा है ना, इट इज ए लिमिटेड जनरलाइजेशन. लिमिटेड तो है, पर इतनी लिमिटेड नहीं है कि सिंपली एम्पेरिकल जनरलाइजेशन बन जाए. ये इट कवर्स अंडर इटसेल्फ नंबर ऑफ एम्पेरिकल जनरलाइजेशन. समझ गए आप? नहीं समझे? ये 4 एम्पेरिकल जनरलाइजेशन, एक थियरी दैट रेट ऑफ सुसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिडेरिटी. वो थियरी जो है इन 4 एम्पेरिकल जनरलाइजेशन को कंप्लीट अपने अंदर कवर करती है ना, करती है कि नहीं? अब आप उस स्टेटमेंट को पढ़िएगा जो मैंने कहा था, दैट दे ट्रांसेंड द लेवल ऑफ mere empirical generalization and are sufficiently abstract and general to deal in order to deal with differing spheres of social behavior. ये differing spheres of social behavior है, different types of social behavior, सबको it is a single theory is able to deal with all of them. It is not a mere empirical generalization. Mere empirical generalization तो एक है, इनमें से कोई एक लोग है, वो mere empirical generalization. भाई कैथोलिक में कम होता है, प्रोटेस्टेंट में सुसाइड ज्यादा होता है, ये empirical generalization. पर थ्योरी तो इससे भी आगे जाती है, वो इसको ही नहीं एक्सप्लेन करती, इसको भी सबको एक्सप्लेन करती है. तो डज इट नॉट डील विद डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ सोशल बिहेवियर? अब आप समझ गए दैट द मिडिल रेंज थियरी, एक तरफ तो वो कहता बहुत लिमिटेड जनरलाइजेशन है, बट वो ये कह रहा है इतनी भी लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ एम्पेरिकल जनरलाइजेशन बन के रह जाए, उससे ज्यादा है. और एक एग्जांपल अगर दूं,
Suppose we have a theory of social conflict that will explain class conflict. क्लास कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है गरीब और अमीरों के बीच की लड़ाई. एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, जैसे हिंदू मुसलमान लड़ते हैं तो वो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है. ऑलराइट, तो द थियोरी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट वुड बी एबल टू एक्सप्लेन क्लास कॉन्फ्लिक्ट, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, और या जैसे जो मीती कुकी का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ मणिपुर में, दैट इज एथनिक कॉन्फ्लिक्ट. एंड इवन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट. तो सब तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन करते कि इतनी जनरल भी होती है, इतनी जनरल नहीं होती कि यूनिवर्सल हो जाए, बट इतनी कम भी नहीं है कि सिर्फ एम्पेरिकल जनरलाइजेशन बन के रह जाए. तभी मिडिल कहता है वो, ना उस एक्सट्रीम पे ना इस एक्सट्रीम पे. पार्सन्स की तो उस एक्सट्रीम पे थी यूनिवर्सल, दूसरे एक्सट्रीम पे आती है एम्पेरिकल जनरलाइजेशन. जैसे ये 4 एम्पेरिकल जनरलाइजेशन है. तो मिडिल रेंज थ्योरी इन दोनों के बीच में पड़ती. अब समझ गया? एवरीबडी हैज अंडरस्टूड इट. देन नेक्स्ट, they don't remain isolated. But can be integrated. But can be integrated. In a wider network of theories. That one theory can be connected with another theory. So we can build a network of theories. Then he says that idea of middle range theory is directly in line of continuity. Is directly in line of continuity with classical theories like Durkheim's theory of suicide and Weber's thesis of Protestant ethics and the spirit of capitalism. Weber's thesis of Protestant ethics and the spirit of capitalism. They act as a bridge between micro sociological research and macro sociological generalization. क्या समझे? ये माइक्रो सोशियोलॉजिकल रिसर्च डिस्कवर्स एम्पेरिकल जनरलाइजेशन, और जो मैक्रो थ्योरी है जैसे पार्सन्स की थ्योरी इज अ मैक्रो थ्योरी, इज अ यूनिवर्सल थ्योरी. इन दोनों का कनेक्टिंग ब्रिज है. यहां से आपको वहां जाना है तो इस ब्रिज से होके जाना है. पहले मिडिल रेंज थ्योरी डेवलप करनी पड़ेगी, देन स्लोली कनेक्टिंग मिडिल रेंज थ्योरी विद ईच अदर यू विल हैव टू रीच टू द मैक्रो थ्योरी. Then further, line of continuity means जो वेबर्स थियरी थी प्रोटेस्टेंट एथिक्स की और दुर्कीम्स थियरी ऑफ सुइसाइड, वो भी मिडिल रेंज थियरी थी.
उसी तरीके की थियरीज होती है ये. मिडिल रेंज थियरीज आर लाइक Durkheim's theory, which he considers as an example of middle range theory. Durkheim's study of suicide, according to Merton, is a middle range theory building. और वेबर की स्टडी ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स इज ऑल्सो मिडिल रेंज थियरी. सो मैं जो मर्टन कह रहा है, जो मैं थियरीज बता रहा हूं, वो उसकी कंटिन्यूटी में है, वैसी ही थियरी बनाने के लिए बोल रहा हूं. डिड यू अंडरस्टैंड? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? श्योर. देन they have no claims to answer all practical problems. They have no claims to answer all practical problems. As I mentioned, Merton ने पहले कहा ना, it appears that Parsons is trying to provide an answer to all practical problems. तभी उसने ऐसी theory develop की है. तो he says a truly scientific theory does not make that claim. We can answer every question about every practical problem about society. No. They only address themselves to those problems that might be clarified in the light of available knowledge. They only tell you कि भाई with the present knowledge that we have, this is all we can explain. Beyond this, अब अभी इससे ज्यादा हमें नहीं पता है, हम आंसर नहीं दे सकते. समझे? They don't make a claim कि हम सोशल लाइफ के हर एस्पेक्ट को एक्सप्लेन कर देंगे. You understood? Then he says, they recognize what is still to be learned and therefore specify ignorance. इसका मतलब समझे? That from the existing theory we deduce a new hypothesis. That hypothesis is specifying ignorance. Hypothesis is telling कि ये एरिया अभी हमें इसकी सर्टिफाइड नॉलेज नहीं है, तो दे स्पेसिफाई इग्नोरेंस कि भाई ये एरियाज है जिसमें और नॉलेज इकट्ठी करने की जरूरत है. तो वो थियरी कैसे हेल्प करती है? बाय जनरेटिंग हाइपोथेसिस. एग्जिस्टिंग थियरी से हाइपोथेसिस प्रोड्यूस करेंगे और वो हाइपोथेसिस बताएगी कि भाई ये एरिया, इस पे और रिसर्च की जरूरत है. वी नीड इन ऑर्डर टू अराइव एट सर्टिफाइड नॉलेज. ऑलराइट, मैं इसका एग्जांपल अभी थोड़ी देर बाद दूंगा जब व्हेन आई एम टेकिंग अप the next topic of Merton. I'll illustrate this. Keep that in mind. So these are the characteristics of middle range theory. इस बार एक सवाल आया था यूपीएससी में about the reference group behavior, and in that part of the reference group theory is given by Merton. And Merton clearly said that it is a middle range theory. तो उस सवाल में उन्होंने पूछा था, is it a universal theory? Is a middle range, is a theory of reference group behavior a universal theory? Merton कहता है नहीं, it is not a universal theory, it is the middle range theory. Indirectly they ask the question on middle range theory. Now, there are many die-hard supporters of Parsons who would not easily accept this criticism of Parsons, and therefore they have criticized Merton's concept of middle range theory.
For example, Robert Bierstadt, Robert Bierstadt, he has criticized Merton's idea of middle range theory. He says that the idea of middle range theory represents a very low level of intellectual ambition. And it will lead to lack of vision and loss of sociological imagination. That with middle range theory, there would be decline of macro sociological inquiry. And that it will lead to fragmentation of knowledge, because there would be so many unrelated specialized theories. It will lead to fragmentation of knowledge, because there will be so many unrelated specialized theories. Now, Merton tries to defend himself. He says, I am not opposed to macro theory, but that macro theory should arrive in the end on the basis of empirical research. All that he is opposed to is premature macro theorizing without empirical research. That's what Parsons has done. Macro theorizing. रिसर्च तो की नहीं, सिर्फ स्पेक्युलेटिव आइडियाज से थियरी बनाना इज नॉट थियरी बिल्डिंग, इट इज प्रीमेच्योर थियराइजिंग, because there is not enough empirical basis for such a theory. आप समझ गए? There is no empirical basis. He cites the example of Einstein. Einstein tried to develop a unified field theory, but by the time Einstein arrived in physics, millions of man hours of research had taken place. And he said, we stand on the shoulder of giants. There was Kepler, then there was Galileo, then there was Newton, then there was Maxwell, then there was Max Planck. इतने सारे सोशियोलॉजिस्ट ने एक के ऊपर एक लेवल ऑफ जनरलाइजेशन को बढ़ाया. आफ्टर दैट अराइव्ड आइंस्टीन. आइंस्टीन अराइव्ड आफ्टर दैट. तो पार्सन्स के केस में तो अभी केपलर भी नहीं आया है सोशियोलॉजी के पास, और तुमने आइंस्टीन जैसी थ्योरी बना दी, तो प्रीमेच्योर है. सो ही सेज आई एम ओनली अपोज्ड टू प्रीमेच्योर मैक्रो थियराइजिंग विदाउट एम्पेरिकल बेसिस. हाँ बोलो. सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन होता है कि टू बी एबल टू विजुअलाइज थिंग्स बियॉन्ड इमीडिएट एक्सपीरियंस. जैसे पार्सन्स ने विजन बनाया है ना अपना, कि ऐसे सोशल सिस्टम होगा, उसके इतने सब सिस्टम्स होंगे, देन दे विल कंट्रीब्यूट टू इक्विलिब्रियम एंड देन देयर वुड बी साइबरनेटिक हायरार्की. तो
all these theory building is a result of imagination of Parsons, speculative ideas of Parsons. So that is what he calls sociological imagination. मर्टन आगे कहता है कि मिडिल रेंज थियरी इज एक्चुअली इज नॉट फ्रेगमेंटिंग नॉलेज, इज यूनिफाइंग नॉलेज. देखो, 4 empirical generalization were included within a single theory. 4 empirical generalization जो हमने रिसर्च से फाइंड की, उसको दुर्खी ने एक थियरी के अंदर कवर कर दिया. तो इट इज नॉट फ्रेगमेंटिंग नॉलेज, इट इज यूनाइटिंग नॉलेज. दैट इज द वे Merton is trying to defend it. This is the debate. Clear? So this is Merton's concept of middle range theory. This also you will not find even in the notes that we have supplied. I have written a very brief note on it. So you have to rely mainly on the class lecture. You will not find such a detailed description except in Merton's original writing. So you can base yourself on the class lecture where I have gone sufficiently in elaborate details in case there is a question on middle range theory. All right. So this was one issue. What was the issue? What kind of theories should be developed in sociology at present? What kind of theories should be developed? So we should develop middle range theory. Now, second issue, which is also a methodological issue, which Merton has taken up, is relationship between theory and research. How research and theory are related to each other. इसका मतलब रिसर्च का थियरी पे क्या असर होता है और थियरी बनाने से रिसर्च पे क्या असर पड़ता है. समझ गया? मतलब समझ गया? तो first he talks about bearing of research on theory. I repeat, bearing of research on theory. You have to rely on class lecture only, so I am going slow and you can note it down. So, how does research impact theory? That's a question. Merton says, that traditionally empirical research has been assigned a rather passive role that is of verifying and testing theory. वेरीफाइंग एंड टेस्टिंग थियरी, इसका मतलब समझ गए आप कि रिसर्च तो पैसिव रहती है, थियरी से इनिशिएटिव आता है. थियरी हाइपोथेसिस जनरेट करेगी और रिसर्च को बोलेगी ना अब इसको टेस्ट करो. तो रिसर्च का क्या रोल है? उस हाइपोथेसिस को जाके टेस्ट करके बताओ, बस. ये तो है ट्रेडिशनल व्यू ऑफ रिसर्च.
समझ गया? अच्छे से समझ गए? मर्टन कहता है कि एक्चुअली रिसर्च हैज 4 other functions. Research performs 4 other functions which help in shaping the development of theory. So research के 5 फंक्शन हो गए. एक तो पैसिव रोल ऑफ टेस्टिंग अ थियरी एंड 4 more फंक्शन. So what are these 4 functions? 1, research initiates a new theory. Research initiates a new theory. एक नई थियरी को पैदा करती है जो पहले कभी भी सोचा जिसके बारे में नहीं गया था, ऐसी थियरी बना देती है रिसर्च. Then it reformulates the existing theory. एग्जिस्टिंग थियरी को रीफॉर्मुलेट करती है, मॉडिफाई करती है. थर्ड, it refocuses the theory, changes the focus in the theory, नया फोकस पैदा करती है, creates a new focus. All right. And fourthly, it clarifies the meaning of the theory. All right. So these are the 4 functions that research performs in addition to testing and verifying a theory. So we'll take up each one of them. How does research initiate a new theory? So to this question, Merton provides the answer that sometimes in the course of research, we come across unanticipated anomalous but strategic data. Strategic data which exerts pressure for initiating a new theory. This is what he calls serendipity pattern. This is called serendipity. 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 Serendipity.
Correct. No one knows more about serendipity than you do. If you watch Indian movies, they are full of serendipity. What he is describing by the statement that unanticipated, anomalous but strategic data come to light. It is like you are searching for a needle in a haystack, but you find a pot of gold. नीडल तो नहीं मिली, लेकिन सोने का खजाना मिल. That's serendipity. तो हिंदी मूवीज में क्या होता है? There are two heroes. One is Salman Khan and other may be anybody else. So सलमान खान, दोनों की लड़ाई हो रही होती है, दोनों दुश्मन है, और लड़ते लड़ते जो है सलमान खान की शर्ट फट जाती है, so that his muscles are visible. तो दूसरा हीरो कहता है, वो देखता है एक लॉकेट उसके गले में, तू तो मेरा भाई है. Alright, so chance discovery that he met a brother. और तभी वहां से राखी आ जाती है फटी पुरानी साड़ी पहन के, बेटा मैं तुम्हारी मां हूं. फैमिली यूनियन. और द हीरो गोज टू द विलेज चेजिंग ए डकॉइट. डकॉइट तो भाग जाता है, बट ही फाइंड्स द विलेज बैले, एंड आफ्टर द डांस एंड द सॉन्ग सीक्वेंस दे आर मैरिड हैप्पीली फॉर एवर. So he found something more valuable than the dacoit. ये serendipity होती, chance discovery. आप जानबूझ के ढूंढ नहीं रहे थे. Most of science is not chance. In most of scientific research, hypothesis ने हमें पहले ही बता दिया होता है कि क्या देखना है, क्या मिलेगा तुम्हें. What are you going to find? Alright. अगर आपको याद हो, वैसे भी इस बारे में मैंने पहले भी बात की थी, बट बड़ी ब्रीफली की थी. When I discuss scientific method, मैंने थॉमस कुन का कॉन्सेप्ट बताया था, नॉर्मल साइंस एंड रिवोल्यूशनरी साइंस. नॉर्मल साइंस में तो पता होता है क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं, उसी एग्जिस्टिंग एजम्पशंस को ही कंफर्म करता है वो. लेकिन कभी कभी समथिंग दैट वाज नेवर एंटीसिपेटेड, इन मोस्ट केसेस साइंटिस्ट एंटीसिपेट कि क्या मिलने वाला है रिसर्च में. ऑलराइट, but sometimes unanticipated data come to light, जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था. और उसकी दो खासियत होती है उस अनएंटिसिपेटेड डेटा की. एक तो वो एनॉमलस होता है और एक स्ट्रेटेजिक होता है. अब एनॉमलस का क्या मतलब है कि एग्जिस्टिंग नॉलेज उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती. द न्यू डाटा विच वी कम अक्रॉस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द एग्जिस्टिंग नॉलेज. तो इसको एनॉमलस बोलते हैं. और स्ट्रेटेजिक कि वो एक नई दिशा दिखाता है. स्ट्रेटेजिक बिकॉज इट डायरेक्ट्स अटेंशन टुवर्ड्स अ न्यू आइडिया, न्यू नॉलेज, न्यू थियरी. ऑलराइट, तो उससे नई थियरी का जन्म होता है. अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, पहले फिजिक्स से एग्जाम्पल दूंगा. साइंस has lot of instances of serendipity. The scientists ended up discovering something which they had no clue and they were not searching for. रॉयंटसन जिसने एक्सरे का डिस्कवरी की, एक्सरे, तो he was conducting some other experiment जहां पे एक मेटेलिक टारगेट पे इलेक्ट्रॉनिक बीम was being made to hit the metallic target. अचानक उसने देखा वहां से तो लाइट निकल रही है, ग्लो, कुछ चमक रहा है. दिस इज वेयर द सोशियोलॉजिस्ट हैज टू बी सेंसिटिव, साइंटिस्ट हैज टू बी सेंसिटिव कि जो नया डाटा आ रहा है उसको नोटिस करे, इग्नोर ना कर दे. अगर वो बता रहे ग्लो कर रहा है, करने दो, खाम का ग्लो हो रहा है. वैसे उसने कहा यार ये ग्लो क्यों हो रहा है, यहां लाइट कहां से आ गई, यहां तो इलेक्ट्रॉन बीम था. तो लाइट अंदर से आ रही है, यानी कि एनर्जी रेडिएशंस आ रहे हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द मेटेलिक टारगेट,
और उनको उसने, क्योंकि उसको नाम नहीं पता था, उसने कहा एक्स रेज, रेज ऑफ एनर्जी आर कमिंग, तो एक्सरे की डिस्कवरी हो। ऐसे ही वो जो रेडियो एक्टिविटी है, दैट वाज आल्सो डिस्कवर्ड बाय चांस। The scientist was trying to conduct an experiment in which he used a photographic plate and some material which he placed on the photographic plate और उसको ड्रॉर के अंदर डाल दिया। अगले दिन जब उसने फोटोग्राफिक प्लेट को देखा, फोटोग्राफिक प्लेट वाज एक्सपोज्ड। इसका मतलब उसके अंदर से बहुत पेनिट्रेटिंग रेज ऑफ लाइट गई हैं जिन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट को एक्सपोज कर दिया। दे कुड गो अगेंस्ट द रैपर, फोटोग्राफिक प्लेट तो रैपर में बंधी हुई थी, उसको भी पार करके चली गई। लाइट तो, ऑर्डिनरी लाइट तो उसको पार नहीं कर पाती है, डजंट हैव सो मच ऑफ एनर्जी, तो उसको अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन, गामा रेज कहा गया। दे वर गिवन दीज नेम्स, अल्फा बीटा एंड गामा, एबीसी जैसे कहते हैं, ए रेज, बी रेज, एंड तो नए रेडिएशन आ गए। दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सेरेंडिपिटी। They were not searching for it. They had no clue about it, but they discovered it. अगर लगातार आप सेंसिटिव होके रिसर्च करते रहो, so you can come across serendipity situation where unanticipated, anomalous but strategic data come to light. सोशियोलॉजी में एग्जाम्पल अगर दे तो हॉथरॉन स्टडी जो थी, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी बोला है, हॉथरॉन स्टडी में they were actually conducting an experiment on illumination and productivity. वो एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया, लेकिन they ended up discovering something new, the role of informal groups and need, how important is the need for solidarity for people, how important is solidarity for people. तो ये चांस डिस्कवरी थी। This is how research initiates a new theory. Tell me if everyone has understood. Anybody who has not understood anything? Yes, that is why the experiment failed. Illumination का कोई फर्क ही नहीं पड़ा. Even with very poor illumination, they worked very hard. जो कि नॉर्मल हालत में वो नहीं करते, पर उनको लगा कि when they are being observed, तो हमें बेस्ट करके दिखाना है. So people's behavior, ये तो इसको Hawthorne effect कहते हैं. What you said, no, that people's behavior changes when they know they are being observed. This is called Hawthorne effect. Then second role of research, reformulating or recasting an existing theory. In this case, we do not come across new data which is unanticipated and anomalous, but repeated observation highlights the importance of hitherto means so far, neglected facts which had not been taken into account, while building the existing theory. All right.
Now, what does it mean? Here, he is saying that when we are conducting repeated research, carrying out repeated observation, there are some facts which are known, but they are not considered important enough for theory building. They are not included in constructing the theory. That's immaterial, ignored. By repeated research, the importance of those facts, neglected facts, is realized. By repeated research, we realize the importance of those neglected facts. Here, Merton cites the example of Malinowski's study. Now you understand why we talked Redfield, Brown and Malinowski. That to understand Merton, we have to make references to Malinowski. He cites the example of Malinowski's theory. You know, Malinowski conducted research in Trobriand Island. And Malinowski, one of the areas of investigation was magic. You remember that? So, magic had been studied even before Malinowski also, particularly by James Fraser, जिसको Malinowski ने criticize किया. So, James Fraser knew that magic is not practiced on all occasions. In some occasions you practice magic, sometimes you don't. All right. So, this aspect was not considered important enough earlier. But Malinowski gave emphasis to this, that why they don't practice magic when they go to shallow waters, coastal areas, lagoon waters, and when they go to high sea, they practice magic. So when he carefully observed high seas, magic while entering the high seas, he found that there is anxiety and fear among people, which is not there in shallow waters. And performance of magic alleviates anxiety, alleviates fear. So he says, magic is not at all irrational. Magic is not irrational. Magic is rational. As long as their technology is adequate, they don't go for magic. Their technology is sufficient to handle shallow waters. They have no fear of drowning. They can swim back to the island. It is only where technology fails, magic begins. Their boats are not good enough for deep sea fishing. And there are instances of drowning, of capsizing of the boats and drowning of the people, which creates fear among them. And magic is a mechanism to eliminate that anxiety and fear, anxiety about death and fear of death. So magic is a rational thing. Magic only begins where technology fails or technology ends. So this is how sociological view about magic was reformulated because of Malinowski's research. Is that clear? Then, next, it leads to refocusing or changes the focus in the theory. Deflects or changes the focus. How? He says through repeated research, what happens?
that we are able to improve the techniques of data collection. We are able to improve the techniques of data collection, and that provides access to new data which was not available so far. All right. By improvising, by improving the techniques of data collection, we are able to find new data. With the availability of new data, the focus of the theory shifts. For example, there were many new research techniques like projective methods, Rorschach. Rorschach is the name of the scientist. Rorschach test. Thematic apperception test. Thematic apperception, APPERCEPTION, apperception. Story completion test, etc. Story completion test. Now, these are examples of techniques of data collection, particularly regarding personality. So, how social structure shapes personality? That was the issue. Earlier, the focus was on social structure, the role of social structure. But there was not enough focus on personality, because data about personality were earlier not available. Through these tests, the data on formation of personality became available, and the focus shifted more towards personality. See, I'll tell you a joke. There was a man sitting on the ground by the roadside and searching for something in the ground. One of his friends passed by. So he spotted him. He asked him, "Hey, what are you doing?" He said, "I'm searching for a needle." He said, "You are searching?" His friend said, "You are searching for a needle here. How did you drop it by the roadside?" He says, "No, I didn't drop it here. I dropped it at home." "So then why are you searching here?" He says, "Because lamppost is here. At home there is no light. So I am searching where light is there." All right. Science is like that. Science आपको वो जवाब देती है जहां लाइट होती है, that means जहां डाटा अवेलेबल हो. Science always gives you a limited answer, depending on the availability of data. तो साइंस का फोकस वहीं होता है जहां डाटा अवेलेबल होता है. If new data becomes available, focus shifts in the direction of the new data. समझिए? So this is how it shifts the focus. जैसे आप with so far sociologists were talking about how society shapes personalities of the members of the two genders, men and women. They behave differently. So how their personalities are shaped by society. Now new data is becoming available on genetic makeup of people,
all right, of the better in knowledge about the structure of the brain. So they are talking about even biological factors are there which influence their personalities, because new data on genes is becoming available. समझे ना? So as we gain access to new data, the focus shifts in the direction of that. जहां लाइट मिलती है वहीं पे एक्सप्लेन ढूंढने चले जाते हैं कॉज को. समझ गया? Then fourth, clarification of the meaning of concepts and theories. What is a theory? It's a general statement which combines two or more concepts. It shows the relationship between variables, and the variables are described in terms of concepts. Now, research demands that the concept should be defined in a very precise and clear manner. How? Because we have to operationalize the concept. See, concepts are abstractions, all right, and therefore concepts are not directly observable. Concepts are not directly observable. So we have to redefine the concept in terms of indices. Index का plural है indices. In terms of those indices which are observable. This is called operationalization of concept. So every time we conduct research and we formulate a hypothesis in which we would find concepts which have to be operationalized. Through operationalization, the hidden meaning of concept become explicit. Through operationalization, the hidden meaning of concepts become explicit. And that is how we come to clarification of the meanings of concepts. Merton himself has given two examples to demonstrate that. One, the example is about the concept of anomie, but he has taken two different cases of research. In both of them, the concept of anomie was used. So Leo Thrall he wanted to collect data in terms of the subjective conditions, or what are the subjective conditions that develop when there is anomie. इसका मतलब क्या हुआ? How do people think and feel if there is anomie in the society? So he created a set of questions which he would ask in the interview with the respondent. One, that if there is a perception among people
that all leaders are self-seeking, unconcerned about public welfare. If this is what people think about their leaders, that means it indicates an enemy. Similarly, that life is becoming more and more unpredictable, that life goals are receding rather than being realized. All that you want in life is becoming more and more difficult to achieve. That's what it means. Then people feel that friends and relatives cannot be relied upon for support in times of crisis. And finally, futility of existence. Life has no meaning, it's absurd. All right. So when people think like that at the subjective level, according to Leo Strauss, then it means there is anomy. Clear? Then there was another sociologist, Bernard Lander. He looked into objective conditions in the research. आप ये समझ गए ना सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का फर्क. Subjective is how people think, what people think, and objective is what is observable and verifiable. So Bernard Lander was using statistical data to study anomy. So if there is high delinquency rate in an area, if there is high rate of delinquency in an area, delinquency समझते हैं? Crime. Delinquents are criminals, children who are criminals. High delinquency rate in an area. So ये observable data है. So then it is an indicator of anomy. Then more ethnic diversity in the community. Like there are a lot of non-white along with white. अब एथनिकली डाइवर्स अगर होंगे, कोई मैक्सिकन है, कोई चाइनीज है, कोई इंडियन है, कोई यूरोपियन है, कोई पोलैंड से आया है, सच पीपल आर नॉट गोइंग टू हैव क्लोज नेबरहुड रिलेशन. ऑलराइट. सो इन सच अ सिचुएशन सोसाइटी का कंट्रोल वीक होगा और नॉर्मेटिव रेगुलेशन नहीं होगा. फिर सोसाइटी ही तो नॉर्म्स नॉर्मेटिव रेगुलेशन करती है, तो एनोमी हो जाएगी. So this is how he found this as an indicator. Then another index he identified was that most of the residents are tenants and not house owners. जहाँ हाउस ऑनर्स होते हैं उनके पुराने संबंध होते हैं, they have long lasting relation. Tenants तो आते रहते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, they are hardly concerned with each other, so their relations are weak. So this is the objective dimension of anomy. So like this, every time you conduct research, all hidden meanings of concept become clear. Clear? Everybody is understood? Okay. Now the other side of the story. अभी तक हमने क्या किया? We looked at the bearing of research on theory. कि research theory को कैसे impact करती है. Now the other side is how theory impacts research. Bearing of theory on research.
So firstly, he explains what is a theory. He says an empirical generalization becomes a theory if the generalization is conceptualized. If the generalization is conceptualized in abstraction of higher order. Now, what do you understand by this? I have already explained this, that these are empirical generalizations. They are not theories. We made them more general and abstract. We brought in an abstract concept called solidarity to replace concrete things like Catholic and Protestant. All right. Catholic and Protestant are identifiable, observable people. Solidarity तो abstract idea है. हम कह रहे हैं hidden inside Catholics is greater solidarity. Among Protestants there is lack of solidarity which is hidden among them. Is not directly observable. वो ये नहीं कहे उसके पास यहाँ पे he is not carrying a placard saying I have solidarity. So it's an abstraction, it's a hidden concept. So we move to higher order abstraction. From Catholic Protestant to we move to an abstraction of higher order, that is solidarity, and link that with the rate of suicide. तो वो जो जनरलाइजेशन है वो थियरी है. ये थियरी नहीं है, ये एम्पेरिकल जनरलाइजेशन. समझ गए आप? अब अगर थियरी बिल्ड करें तो उससे क्या फायदा होता है? हम इसको और थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट करते हैं. देखिए, the statement I have made is rate of suicide is inversely proportional to solidarity. I am making it more general and abstract. Instead of suicide, I say rate of psychic morbidity is inversely proportional to solidarity. Psychic morbidity means psychic illness. साइकिक इलनेस तो एक ब्रॉडर जनरल कॉन्सेप्ट हो गया ना. सुसाइड तो एक तरीके की प्रॉब्लम है. साइकिक मॉर्बिडिटी में तो और भी प्रॉब्लम आती है. तो इसको मैंने मोर जनरल कर दिया. आई मेड इट मोर जनरल. सो आई से रेट ऑफ साइकिक मॉर्बिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिडारिटी. अब इससे क्या फायदा हुआ? आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू लुक इनटू अदर टाइप्स ऑफ साइकिक मॉर्बिडिटी. Other types of psychic morbidity like schizophrenia, obsessive behavior, paranoid behavior, स्कीजोफ्रेनिया, ऑब्सेसिव बिहेवियर, पैरानॉइड बिहेवियर. अभी तक हमें दुर्कीम की थियरी तो सिर्फ हमें सुसाइड के बारे में बताती है. इसको फर्दर एब्स्ट्रैक्शन लाने से इट इज गिविंग अस ए हिंट के शायद ये भी सॉलिडारिटी पे डिपेंडेंट. स्कीजोफ्रेनिया में ऑल्सो, क्योंकि सुसाइड इज वन टाइप ऑफ साइकिक मॉर्बिडिटी, स्कीजोफ्रेनिया इज अनदर. वो उसका कजिन है. अगर उसको इफेक्ट हो रही है तो उसको भी सॉलिडारिटी इफेक्ट करेगी. तो हमको एक नई हाइपोथेसिस मिल गई कि स्कीजोफ्रेनिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिडारिटी.
अब इससे नया रिसर्च होगा, नई थियरी बनेगी, रिपीटेड रिसर्च से अगर ये बात प्रूव हो गई तो एक और थ्योरी हो जाएगी। दुर्खीम ने तो एक ही थ्योरी दी थी सुसाइड की, हमने एक और थ्योरी ऐड कर दी स्किज़ोफ्रेनिया की। फिर ऑब्सेसिव बिहेवियर एक और टाइप का बिहेवियर होता है, पैरानॉइड बिहेवियर एक और टाइप का बिहेवियर होता है। तो एक थ्योरी से 4 थ्योरी बन गई। दिस इज हाउ रिसर्च इज ट्रिगर्ड बाय थ्योरी बिल्डिंग। अगर हम थ्योरी नहीं बिल्ड करते तो हमें सिर्फ कैथोलिक प्रोटेस्टेंट के बारे में पता होता और कुछ नहीं पता। अब हमने उसको थ्योरी को जनरल बना के, एब्स्ट्रैक्ट बना के वी प्रोड्यूस, एक थ्योरी में से 4 थ्योरी निकल आई, एक सुसाइड की, एक स्किज़ोफ्रेनिया की, एक ऑब्सेसिव बिहेवियर की, एक पैरानॉइड बिहेवियर, और रिसर्च बढ़ गई। तो थ्योरी प्रोड्यूसेस रिसर्च, जनरेट्स रिसर्च, लीड्स टू फ्रूटफुलनेस ऑफ रिसर्च। फ्रूटफुल कैसे होती है रिसर्च? जब नई थ्योरी का जन्म होता है उससे, इट गिव्स बर्थ टू ए न्यू थ्योरी। Clear? Another utility of theory building is that it makes prediction possible. Theory is an explanatory statement. तो theory से we can predict the outcome, कि क्या रिजल्ट होंगे, क्या consequences होंगे, and then that will further trigger research to see whether those consequences really obtain. All right. So this is how theory generates research. This is the bearing or impact of theory on research. So research से theory बनती है, theory से research बनती है. Now any questions you have, tell me. Anything you have not understood. Come here. Sit here. Now tell me. Instead of I coming there, I thought I'll make you come here. बैठ जाओ और बताओ, अच्छे से बताओ क्या डाउट है आपका। हाँ बताइए क्या डाउट है। You explained how subjective and objective. What I did was I cited 2 examples which are cited by Merton himself कि रिसर्च जो है वो कॉन्सेप्ट के डिफरेंट मीनिंग्स को कैसे हाईलाइट करता है। रिसर्च जब करते हैं तो इट लीड्स टू क्लैरिफिकेशन ऑफ मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड थियरी, है ना। तो हर कॉन्सेप्ट जो है दैट इज अबाउट रियलिटी, उसकी एक सब्जेक्टिव साइड भी होती है, एक ऑब्जेक्टिव साइड होती है। सब्जेक्टिव इज व्हाट पीपल थिंक, व्हाट इज देयर इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, एंड ऑब्जेक्टिव इज व्हाट इज ऑब्जर्वेबल एंड वेरीफाइबल। ऑलराइट, सो ही हैज साइटेड 2 एग्जांपल्स। ये एग्जांपल मैंने नहीं चुने हैं, ये मर्टन ने ही बोले हैं कि भाई लियो सरोल ने सब्जेक्टिव डायमेंशन ऑफ एनोमी को हाईलाइट कर दिया। इससे हमें पता चला कि एनोमी होगी तो लोग कैसे सोचेंगे, उनके किस प्रकार के विचार आएंगे उनको। दैट डायमेंशन गॉट हाईलाइटेड बिकॉज ऑफ रिसर्च। ऑलराइट, और बर्नार्ड लैंडर ने कहा कि ऑब्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, किन हालात में जो है एनोमी मतलब का मैनिफेस्टेशन होगा, हाउ वुड एनोमी बी मैनिफेस्टेड। ऑलराइट, उसके ये तो था फर्स्ट लियो सरोल का तो कि लोगों के विचार में कैसे एनोमी दिखेगी, और ऑब्जेक्टिव कंडीशंस में एनोमी कैसे दिखेगी, ये बर्नार्ड लैंडर ने शो कर दिया। तो इस तरीके से बार बार जब हम रिसर्च करते हैं वी मेक द कॉन्सेप्ट मोर एंड मोर क्लियर। क्लियर?
एनी अदर क्वेश्चन? थोड़ा जोर से। हाँ, इंडिसेस मत देखो, कॉन्सेप्ट तो दिखेगा नहीं, एनोमी तो कहीं रखी, ये है एनोमी, ऐसे तो नहीं पता चलेगा, तो फिर ये कैसे ऑब्जर्व करें एनोमी को? हाउ डू वी ऑब्जर्व एनोमी? तो हमको क्या करना होगा, एनोमी को ऐसी चीजों से रिलेट करना होगा, एनोमी को अच्छे से अंडरस्टैंड करके उनको उन चीजों से रिलेट करना होगा जो हम ऑब्जर्व करते हैं, कि वहां लैंडलॉर्ड है कि टेनेंट्स हैं, ये ऑब्जर्वेबल चीज है। डेलिंक्वेंसी रेट क्या है, पुलिस स्टेशन में जाके पता चल जाएगा कितने क्रिमिनल्स हैं क्या। तो या जो है एथनिक कॉम्पोजिशन के, ब्लैक, हिस्पैनिक्स, ऐसे, और मतलब उस एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है, ये भी ऑब्जर्वेबल है ना। इनको ऑब्जर्व करके हमें पता चलेगा एनोमी है कि नहीं। एनोमी बाय इटसेल्फ तो ऑब्जर्वेबल है ही नहीं, कोई भी कॉन्सेप्ट ऑब्जर्वेबल नहीं होता है, उसका इंडेक्स बनाना पड़ता है ऑब्जर्व करने के लिए, और इंडिसेस इज अ प्लूरल ऑफ इंडेक्स। समझ गए? ऑल राइट, so we'll wind up with this. We'll continue with Merton tomorrow.